Bengal. It's Bengal Governor versus the Chief Minister Mamata Banerjee. The violence arson that was reported in Murshidabad that led to families who were forced to flee, take the Ganga River, hold their little babies tied to them as their houses were being burned down by the protesters of the Anti-Waqf Amendment Bill. Right now, C.V. Anand Bose, the Governor of Bengal, is en route to Murshidabad, then Malda as well. But Mamata Banerjee, the Chief Minister, urging him to postpone his visit, considering it's a sensitive area. However, the Governor was also very clear that he will go because he wants to make an objective assessment of the ground situation. Mamata Banerjee, remember, meanwhile, has announced a special investigation team will be led by senior officers of the Bengal police and will probe further into the violence, how it happened, who incited it, what exactly was the reason behind it. But she's also vowed to rebuild the houses of the victims who have been impacted by the arson and violence. The Calcutta High Court has directed the state government to stand by the people of Murshidabad who've been affected. Meanwhile, a team of women's panel, the NCW, also are en route right now and will want to speak to the eyewitnesses, survivors, especially women and children. You see, violence is there in Bengal. It's not created in the last few years. There is a tradition of violence, particularly during elections. I would trace it to the days of the direct action, where thousands of people were butchered in the state. Then it spread to Navakali, where Gandhiji himself had to go. Now, the specter of violence is very much in the field. It comes in the fore during elections and crisis times. See, here in what I could gather from the victims who came and met me, a section of the people coming and displacing another section from their hearth and homes and pushing them to seek asylum in relief camps in their own country. A sense of alienation is created forcibly in one's own country. This is not something which any civilized society can tolerate. You know, two things which I consider as cancerous growth in the body politic of Bengal is violence and corruption. Violence and corruption. These are twins. There is rampant incidence of violence and corruption in Bengal. Naturally, we have to stem the tide. We have to nip it in the bud. It's not too late. All stakeholders, the central government, the state government, the political parties, both the ruling party and the opposition, the silent majority of the media, civil society, all have to come together in this fight against violence and communal violence. In Bengal, I see, maybe in some other states also, I don't blame Bengal, but in Bengal in particular, I see there is a failure on all these four stages. And this cannot be allowed to continue, because the primary responsibility of the elected government is to see that the life and property of the citizens are protected. हम शिविर में जाएंगे, वहाँ पे रुकी हुई जो महिलाएं हैं, उनके साथ बात करेंगे। ये भी बात आई है कि उनके साथ अच्छा व्यवहार नहीं हुआ है, इसके बारे में भी हम उनके साथ बात करेंगे और प्रत्यक्ष रूप में स्थिति का जायजा ले लेंगे और उसके बाद आयोग अपनी रिपोर्ट बनाएगा। राष्ट्रीय महिला आयोग उन महिलाओं के सुरक्षा के लिए और उनके सम्मान के लिए जो हमारे अधिकार में है, वो सभी कदम हम उठाएंगे। আমি রিকোয়েস্ট করব এই মুহূর্তে সিচুয়েশন কেউ যেন আমরা গিয়ে লোকাল ছাড়া আর সিচুয়েশনকে আমরা যেন কেউ কি বলবো যে শান্তির বাতাবরণ ফিরে এসেছে, যে এখন মানুষের কাছে যেটা প্রয়োজন সেটা হচ্ছে কনফিডেন্সটা বিল্ড আপ করা। সেই কাজটা প্রশাসন করছে। তা নাহলে আমি নিজেও যেতে পারতাম, তাহলে আমি যাচ্ছি না কেন? আমি তো যাবো ঠিক টাইমে। এখনই আমি যাওয়া মানে তাহলে আমি গেলে অন্যরা কেন যাবে না? আইন তো ক্যানট বি ডিসক্রিমিনেটেড বিটুইন ওয়ান টু অ্যানাদার। আমি অ্যাপিল করব মাননীয় রাজ্যপাল মহাশয়কে, প্লিজ ওয়েট ফিউ ডেজ মোর। আমাদের স্টেট উইমেন কমিশনও যেতে চেয়েছিল, তাদেরও আমরা বলেছি প্লিজ জাস্ট ওয়েট ফিউ ডেজ মোর, কিছুদিন অপেক্ষা করুন। রাজ্যপাল যারা রাজ্যপালকে পাঠাচ্ছে অর্থাৎ বিজেপি, তো এখন ওখানে কোনো ভিআইপিরই সেই অর্থে কটা দিন যদি মানুষকে একটু থিতু হতে দেন, রাজ্য সরকার যা যা করার করছে, কারোর বাড়ি ক্ষতি হয়ে থাকলে সেটা তৈরি করা, কারোর ফিনান্সিয়াল হেল্প যা যা করার সব করছে, মুখ্যমন্ত্রী সেই জায়গা থেকে বলেছেন আমিও যাচ্ছি না,
আমি যথাসময়ে যাব, কিন্তু মানুষগুলোর একটু কনফিডেন্স লেভেল একটু বাড়ুক, কারণ এটার সঙ্গে একটা বড় প্লট জড়িত। এটা স্থানীয় আইন শৃঙ্খলার বিষয় নয়, এটা বাংলাকে টার্গেট করে একটা বৃহত্তর ষড়যন্ত্র, তার সঙ্গে রাষ্ট্রশক্তির একাংশের ভূমিকা থাকতে পারে, সেটা তদন্ত সাপেক্ষ। यदि राज्य में इस प्रकार का माहौल है और उसमें खुद मुख्यमंत्री इन्वॉल्व होकर के जनता को बांटने का काम कर रही हैं और मतलब वहाँ पे जो हिंदू परिवार है उनके ऊपर इतना अत्याचार, इतना स्थिति उनकी दर्दनाक है कि उनको वहाँ से जाना पड़ रहा है, तो इससे ज़्यादा शर्म की बात किसी राज्य के लिए नहीं हो सकती और विशेष रूप से ऐसी महिला मुख्यमंत्री के लिए। देखिए, पश्चिम बंगाल में जो घटनाएं हो रही हैं, पूरे पश्चिम बंगाल में सनातन धर्म को स्वीकार नहीं किया जा रहा। ममता बनर्जी की अगुवाई में उन पर लगातार हमले हो रहे हैं, हिंदू भाई बहनों पर हमले हो रहे हैं। पश्चिम बंगाल की जनता समय आने पर ममता बनर्जी को इसका खामियाजा देगी और भारतीय जनता पार्टी की पश्चिम बंगाल में प्रचंड बहुमत। All right, so these are the latest reactions that are coming in. We have more news also coming in about what are the latest updates. Visuals on your screen. It appears that the governor C.V. Anand Bose has reached Malda. Remember, Malda is important, though violence took place primarily in Murshidabad, but the refugee camps that have been set up in Malda areas. I correct myself, this is the NCW team as well, the NHRC team that has reached. The NHRC, remember, had been interacting with India Today as well. One of the members, Priyank Kanungo, had told me about 24 hours ago that they received at least 3 serious complaints referring to charges and allegations about how women and children specifically have been targeted, and there have been targeted attacks at the Hindu community.